nomenclature, right? Okay, fine. We will wait 2 more minutes and then we'll start the class. We were doing some examples. We have done how many examples till now? 1, 2, and this is the third one. Okay, then we have done 3. अमीन लिखा दिया स्कूल में. Can you show me, Adriel? Can you send me a photo? Maybe you're writing for ethane, amine, or something like that. But for NH3, it is AMMINE. If you're writing it for NH3. I think you have written about this particular compound, EN. This is ethane 1,2 diamine. But if NH3 is there, this will be amine. Okay, amine. Only for NH3, okay? Only for NH3 you have double M and INE. For the rest, if you have NH2 group or N or NH somewhere, then it is going to be amine or something like that only. Okay, each has their own name. You don't have to mix these things up, okay? Let's write one more example. Please write the fourth example. K3 Fe Cn whole 6. What is the counter ion, guys? Tell me. What is the counter ion here? K3. K3 है. K2 नहीं है, K3 okay? So it's 3. So it will be 3. What will be the charge on K? Potassium पे क्या charge होगा? +1. +1. And this name will be potassium. ठीक है? What is the next thing that we do? B part is Ligand. Ligands. ligands. What are the ligands?
We have 6 Cn negative, right? This will be cyano, or you can also write cyanido. Okay, both of these are fine. Cyano or cyanido. Now write next. What is the next thing that we do? What is the next thing? Guys, what is the next thing? Sir, it won't be hexa. Oh yeah, sorry. Oxidation state यहाँ पे हेक्सा होगा. हेक्सा सायानिडो कर लेते हैं. Both cyanido and cyano are okay, but I would recommend you guys to remember cyanido because chlorido, fluorido वहां पे आप confuse नहीं हो जाएगी. ठीक है? Hydroxo and cyano both are okay, but please remember all the ido forms: chlorido, bromido, iodo, and iodo, and hydroxido and cyanido. C may be a find oxidation state of the central metal atom. Now what will, there are 3 potassium and each potassium has what oxidation state? Tell me. 3 into, for potassium it will be 3 into 1 plus 1 plus iron के लिए what should we write for iron? What should we write for iron? X na, find karna, right? X plus we have 6 Cn, and what is the charge on Cn? -1 -1. This will be Cn में 1 होगा, Zan 0 नहीं होगा. This will be equal to 0. Now X will be equal to X will be equal to 3 plus plus 3. Yeah, tell me who is speaking. Now the metal. Please see, when the complex ion is anionic, then the metal's name, it ends with 8, and for Fe we write ferrate. Okay, for this you'll write a note now, but आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए इसका. IPAC नेम क्या होगा? पोटेशियम. Hexacyanido. Ferrate 1, 2, 3. Okay. Cation and then the anion. Done, guys? Please write this down fast. Abdul Rahman, turn your mic on. What is the first rule, Abdul Rahman? Can you read the first rule? Abdul Rahman, turn your mic on, please. आवाज नहीं जा रही है अब्दुल रहमान, आपको इतना टाइम क्यों लगता है? What is the first rule, Abdul Rahman? If you can't turn your mic on, please rejoin. Got disconnected. All of you done? Yes or no? Please tell me.
Yes, sir, done. Right, next. इसमें 2 नंबर देख लिखिए. Naming of central metal atom. Atom or ion. Yes, Abdul Rahman, turn your mic on. हाँ, पहला रूल क्या है पढ़ के बताइएगा नोटबुक में से अपने. First rule after we have written IPAC nomenclature naming of partition compounds. Name of cationic and neutral complex ion. Yes, Abdul Rahman, can you please read that? Ends with O. क्या? अरे नोटबुक में से पढ़िए ना जो हमने सबसे पहला रूल लिखाया था. What is the first rule after IPAC nomenclature of coordination compound? Keep your mic on, Abdul Rahman. What is the first rule? The cation is named after first. Then After first. अरे cation is named first. Catinus, keep your mic on. What is the first rule? the cation is What? named first and then the end. ठीक है. What is the cation here? In our question, what is the cation? Yes, the potassium. ठीक है, समझ में आ गया? Yes. ठीक. Right here. Name of cationic and neutral complex ion. यहाँ पे apostrophe लिख दीजिए. Ions. Central metal atom or ion is written as it is. Okay, is written as it is. For example, if the complex is neutral or cationic and you have Fe, then you will write it as iron. No change. Okay, as it is. If you have the central metal atom as, let us say, Ag, then what is Ag? It is silver. If it is Au, then you will write it as gold. Got it? Yes or no? Please tell me, guys. But write the second point. Name of metals when complex ion is anionic ends with 8. अच्छा, आज सऊदी में छुट्टी थी आप लोगों की. हाँ, समय रहा. जैन, Yes, sir. हाँ, सरप्राइज छुट्टी मिल गया आप लोगों को. Ends with 8. Okay. Now, if you have also write, for example, if you have zinc, then it will be written as zincate. Okay. If you have, let us suppose, aluminium, it will be written as aluminate. If you have Cr, it will be written as chromate. Cobalt will be written as cobaltate. Okay. Now, right next. For some anionic complexes, for some metals in anionic complex, Latin names are used.
Okay, Latin names will be, for example, if you have Fe, then we'll not write ironate, we will write ferrate. If you have Ag, we will not write silver, we will write argentate. And if you have Au, you're going to write aurate. Sn, it will not be tin, rather it will be stannate. Copper will be cuprate. Write this down. Done, guys? Yes, sir. Write this example. AgNH3 whole twice. And the counter ion is also a complex ion in which we have Ag Cn whole twice. Okay, please see for this one. In this case, since you don't have any, counter ion, you will start here. You can see that both of these are complexes. So first of all, you will start with the oxidation state of the metal, that is Ag. So first is oxidation state of Ag. So since we have 2 Ag, so this will be X, this will also be X, this will be 2X. Okay, this will be 2X and then plus 2 into 0 because of NH3, plus for Cn we are going to write 2 into -1 is going to be 0. Now 2X will be equal to 2, X will be equal to +1. So +1 is my oxidation state. Now once you have found the oxidation state, then you are going to write the ligands for cation and anion and also the metal. So from here you will write about cation and here you will write about anion. So cation is this part, which is written first, and this is the anion, which is written later. So in cation, what is the ligand? Ligand is 2NH3, which will be di-AMMINE. I think we have to take it down. AMMINE. And the metal is Ag. Now, since it is a cation, it will be silver 1. In anion, we have ligand. Ligand is 2 Cn molecule, which will be di-cyanido. C is metal. Metal is Ag, and it will be argentate because it is an ion. And also 1. Name of the compound is going to be, first of all, cation. Cation means, first of all, ligand. It will be diamine. Silver 1. Dicyanido. Argentate 1.
Excuse me, sir. Yeah, tell me. जब एनारोनिक होता है तो कंपलसरी है क्या लैटिन नेम यूज करना या फिर लैटिन नहीं, कुछ के लिए आप अभी ये बात बताइए, जब क्लास होती है तो जरूरी है लेट आना आपका? नो टाइम पे आना है? टाइम पे आना है, टाइम पे आते तो आपको पता चल जाता। नहीं, मैं आया था टाइम से, मैंने देखा भी है, लाइक यू हैव रिटन दैट for some metals in anionic complexes we have to write Latin names. For some metals, Yeah, these are the metals, these are the metals. ठीक है, got it. ओके। Like if we write For only these metals you have to write. फॉर ओनली, नहीं, सिर्फ इन मेटल्स के लिए नाम इस तरह से लिखना है आपको। Fe के लिए फेरेट लिखना, आयरनेट नहीं लिख सकते हैं। only for anionic, right? आयनाइन, कैटायनिक में एज इट इज यू हैव टू राइट। कैटायनिक में अगर Fe है तो आयरन लिखिएगा, Ag है तो सिल्वर लिखिएगा। कैटायनिक में भी, न्यूट्रल में भी, अगर आपके पास न्यूट्रल भी हुआ तो। ठीक है, सवाल कीजिए, सवाल से आएगा। अभी रूल्स लिखिए, ठीक है। सवाल आएगा कैटायन एनायन, वापस हम तो वही कराते हैं ना आपको, वापस से देखिए एक रूल पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ समझ में आने लगेगा। ठीक है, राइट नाउ यू हैव टू गो बैक टू द रूल्स। एक बार में नहीं समझ में आएगा सारे रूल्स क्या है, ठीक है। तो उतना ज्यादा प्रेशर मत डालिए अपने पे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर यू डन विद दिस, यस और नो? डन विद दिस ना? नो, स्टिल राइटिंग? डन। ये सवाल लिखिए। This is an example for neutral case, okay? So since you don't have any counter ion, you'll start with the ligands. You have 3 NH3 and you have 3 Cl. दोनों के लिए लिखिए। B part में you have to calculate the oxidation state of Cr, and then in C part you have to write the metal. चलिए, write this down, send the answer on my WhatsApp.
सीएल का नाम आपने शायद गलत लिख लिया है ना, उसको सही कर लीजिए, बाकी सब कुछ सही है। सहल, दिस फॉर यू। Okay, sir. Also, na, don't write, don't, please don't give any space between these two ligands and then the metal's name, okay? सेम थिंग, स्पेस मत दीजिए प्लीज। आपने देखा नहीं, हमने अभी तक कोई स्पेस नहीं दिया यहाँ पे। यू विल गिव ओनली स्पेस बिटवीन दी कैटायन एंड दी एनायन। Zan, it's right, you're also is right, but same mistake. And oh, Samaira, ये सर मेरा क्या मिस्टेक है? Zan आपका जी सर, मेरा क्या मिस्टेक है? आपका मिस्टेक है कि आपने उसको तो क्रोमेट लिख दिया। क्रोमेट नहीं होगा ना, न्यूट्रल है ये, अच्छा, क्रोमियम होगा। ओके Chromium ओके सर। as it is, without any change. Same thing for Samaira, it will not be chromate, it will be chromium. Ahmed, looking at your answer now. Yeah, correct. सही है Ahmed, that is right. Adria, looking at your answer. Yep, correct. Very good. क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने नहीं आ रहा है फहद? हाँ, टर्न योर माइक ऑन फहद, हम बाहर भेज देंगे Yes, आपको sir. क्लास से। हाँ, नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा है? क्रोमियम के लिए क्रोमियम के लिए एक्स लेंगे, यस और नो? अभी के लिए एक्स लेंगे ना क्रोमियम के लिए, हाँ या ना? जी सर। उसके बाद अब NH3 बताइए, न्यूट्रल है या फिर एनायनिक है या कैटायनिक है, कैसा लिगेंड है NH3? नहीं पता, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो नोटबुक में देख के बताइए। जी, NH3 पे क्या चार्ज होगा? अमीन और ट्राइक्लोरिडी के बीच में ना डैश नहीं होगा अब्दुलरहमान। एवरीथिंग इज करेक्ट, बट देयर विल नॉट बी डैश बिटवीन देम, ठीक है? Okay, sir. स्पेस So भी नहीं space होगा, होगा sir. स्पेस भी नहीं होगा, सब साथ में लिखेंगे, ठीक है? Okay. कॉम्प्लेक्स की सारी चीज साथ में लिखते हैं। फहद, आई एम आस्किंग समथिंग, NH3 इज व्हाट? न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक? Sir, neutral. ठीक है, तो 3 एंड व्हाट विल बी द चार्ज इफ इट इज न्यूट्रल? न्यूट्रल होगा तो क्या चार्ज होगा उस पे? इफ NH3 इज न्यूट्रल, उस पे क्या चार्ज होगा? +1. अरे बिहार कहाँ से आए आप? +1? अरे जब न्यूट्रल है तो 0 चार्ज होगा ना। हाँ, फिजिक्स नहीं पढ़ा क्या आपने? सीएल में बताइए क्या होगा? न्यूट्रल होगा फिर +1 चार्ज बोल रहे हैं। सीएल में बताइए कितना चार्ज होगा सीएल में? 3 सीएल है और हर एक सीएल में कितना चार्ज होगा? बोलिए, हाउ वुड आई नो सर? बोलिए फहद, हमको क्या पता, बोलिए। टेल टेल टेल, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोराइड? या फहद टेल मी। नहीं पता? बोलिए, आप बोलिए एक बार, नहीं पता? Sir, नहीं. नहीं पता? पेज पलटिए, पेज पेज पलटे। आप हैं कहाँ पे बताइए आप? कॉर्ड नंबर हमने सिखाया सबका है, उसके बावजूद भी ये हाल है आप लोगों का। नहीं सर, मैंने 2-3 क्लासेस मिस कर दी। वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको हम पढ़ के आए। जो क्लासेस आपने मिस की है
वो हम रिकॉर्डिंग अच्छा, देखें बैठ के? देखना हाँ है सर बताइए। रिकॉर्डिंग। और हाँ नहीं, वो हम देखेंगे नहीं ना? नहीं सर, कौन नहीं सर। देखेगा? कौन देखेगा? हाँ तो फिर नहीं देखा तो फिर कहाँ से आएगा फिर आपको? ठीक है, -1 होता है, देखिए तभी आएगा। छोटी छोटी चीजें मिस कीजिएगा, नहीं आएगा फिर। कितना हो जाएगा अब एक्स, ये टोटल इस पे कितना चार्ज है? टोटल में चार्ज चार्ज कुछ दिख नहीं रहा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेट न्यूट्रल है ये। x will be equal to what? This 3 into 0 is 0, 3 into -1 is -3, -3 will go there, it will become +3। ठीक है, नाम हो जाएगा मेटल का क्रोमियम 3। बस अब यहाँ पे पूरा नाम लिख दीजिए। NH3 में क्या हो जाएगा? ट्राई AMMINE। Cl के लिए हो जाएगा ट्राई क्लोरिडो। नाम लिखेंगे, पहले क्या आएगा? Cl मतलब क्लोरिडो आएगा या फिर अमीन आएगा? तो अमीन आएगा बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद A, देन यू विल पुट C। ओके, सो नेम विल बी ट्राई MMINE ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम 1 2 3। छापिए जल्दी। जीवा लुकिंग एट योर आंसर। सही है, करेक्ट। स्पेसेस का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। डन एवरीवन? यस और नो प्लीज टेल मी। सबने लिख लिया? जल्दी बताइए, जल्दी, अरे जल्दी। जी सर, लिखना। वेरी गुड। राइट, नेक्स्ट फॉर्मूला फ्रॉम नेम। फॉर्मूला फ्रॉम नेम नंबर 1 वाला एग्जांपल देख लेते हैं सीधा सीधा। सोडियम हेक्सानाइट्रेटो, सोडियम हेक्सानाइट्रेटो इन कोबाल्टेट 3। ओके, नाउ सबसे पहले आपको जब भी आपके पास फॉर्मूला से नाम लिखने का आएगा, प्रैक्टिस ऐसे करना आपको। ठीक है, दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट इट नोटबुक नाउ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लगेंगी। फर्स्ट थिंग इज दैट राइट द कॉम्प्लेक्स नेम, राइट द कॉम्प्लेक्स साइन। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए उसमें मेटल कौन सा है। मेटल इज कोबाल्ट। देन वी हैव NO2 नाइट्रेटो। कितना नाइट्रेटो है? 6 नाइट्रेटो है। इतना कर लिया आपने, आधा काम आपका हो गया। नाउ यू विल डिटरमाइन, बी पार्ट इज डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिख दे, टोटल चार्ज ड्यू टू लिगेंड, टोटल चार्ज ड्यू टू लिगेंड। बताइए, NO2 जो होता है, NO2 इज व्हाट? माइनस क्या होता है? नेगेटिव कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। NO2 कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, किसी को नहीं याद? अरे कॉपी में देख के बता दीजिए। नाइट्रीटो, NO2, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। एनायनिक कितना चार्ज होगा? एक नाइट्रो पे, NO2 पे कितना चार्ज होगा? -1। -1। और कितना है टोटल? 6 है, तो टोटल चार्ज विल बी -6। इक्वल टू 6। हाँ, -6, वेरी गुड। 6 into -1। नाउ सी पार्ट इज, आपके पास -6 चार्ज जो है किससे आ रहा है? लिगेंड से आ रहा है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पार्ट हियर, 3 चार्ज ऑन। आप ये कीजिएगा,
difference take determine difference between charge of ligand and metal। कितना का डिफरेंस हो जाएगा बताइए, माइनस यहाँ पे 6 है और वहां पे 3 है, राइट? सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? -3। 3 का है ना, 3 का डिफरेंस, मतलब आप उसको नेट न्यूट्रल ही ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 का डिफरेंस है ना, यानी कि -6 में से 3 को कौन संभाल ले रहा है? कोबाल्ट इज टेकिंग केयर ऑफ 3, राइट? द डी पार्ट number of counter ion will be equal to the difference, whatever difference you have calculated, divided by oxidation state of counter ion। डिफरेंस कितना है हमारे पास? 3। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 1 + 1। हाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? नंबर ऑफ काउंटर आयन कितने होंगे हमारे पास? 3 काउंटर आयन होंगे। सो नाउ द स्ट्रक्चर विल बी व्हाट? Na3। यही चीज आप लोगों को डिटरमाइन करना रहेगा, जो थोड़ा मुश्किल है। Na3 एंड देन कॉम्प्लेक्स आयन तो आसानी से लिख सकते हैं आप, कोबाल्ट NO2 6। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे कि यही मेथड है सर, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेप वाइज है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है, Na3 क्यों है, ओके, एंड हाउ आर वी डिटरमाइनिंग Na3। ठीक है, जो भी डिफरेंस है, यानी क्या, देखिए सी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिगेंड हैज -6 और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, राइट? दे आर नॉट राइटिंग दिस एज आयन, इट इज नॉट एन आयन, दैट मींस इट इज नेट न्यूट्रल। Now -6 should have something countering it. So -6 का काउंटर +3 कर रहा है कौन? कोबाल्ट। Now there are 3 Na plus which are also countering this -6, making this complete complex net neutral. Okay. So what we have to achieve? We have to achieve net neutrality if they have given us net neutrality. If they have given us ion, then we will look for ion. But right now we have what? Net neutrality. So we have to get the number of counter ions such that the complex becomes net neutral. Write this down. Write it fast. एक एग्जाम्पल करेंगे जहां पे आपके पास where you are going to have charge, जहां पे काउंटर आयन नहीं मिलेगा आपको। Right, next one. ठीक है, यहाँ पे देखें, you have zincate, that means this particular complex ion is what? It is anionic and we don't have any counter ion here. Now these are very easy, these are very easy। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे you have to write जिंक है तो जिंक लिख दीजिए, then you have hydroxido, hydroxido means OH, and how many OH you have? You have 4 OH, right? And then you give the square brackets. Now you have to determine what is the charge on this complex ion. To determine the charge, it is very easy. Zinc के लिए क्या बोला उन्होंने? It is +2, and OH is how much? 4 OH, and each OH has what? -1 charge, so it will be 4 into -1। इन दोनों का अगर आप add on कर दीजिए तो you will get 2 - 4, which is equal to how much? Which is equal to -2। इस पे ऊपर चार्ज हो जाएगा -2। That's it. Got it, guys? Yes or no? Please tell me. If you don't have counter ion, then it is much easier. If you don't have counter ion। अब आपने जब इसको एक मेथड सीख लिया, अब एक और चीज आपको दिखाते हैं। लेट्स डू वन मोर। थ्री, देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले क्या कीजिए आप, यू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन इज व्हाट? निकल।
Cyanido will be Cn, and how much? Tetra, so it will be 4. Now what they are asking, they are saying that nucleate is 2, so it will be plus 2. Then Cn is what? 4 into minus 1. So the complete charge on this complex will be equal to how much? 2 minus 4 is equal to minus 2. So this complex is having minus 2, तो उसको काउंटर करने के लिए पोटेशियम के पास भी कितना होगा? K2. ठीक है, why K2? K2 because each potassium has plus 1 charge. ठीक है, so whatever the charge on complex divided by oxidation state of counter ion, ये भी आप लिख सकते हैं. Charge on complex is equal to what? 2. ऐसे कर दीजिए इसको. Divided by oxidation state of central atom is what? 1 equal to 2. So K2 हो जाएगा यहाँ पे. Is it clear? Yes or no? Please tell me, guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Look at this one. Hexamine, cobalt 3. So cobalt will be cobalt CO, hexamine NH3 whole 6. Okay. Now NH3 whole 6, and this cobalt is how much? Cobalt is 3. चलिए ये और आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे what is going to be? Cobalt is 3, and NH3 is going to be how much? NH3 is going to be how much? What is the oxidation state of NH3? 0. 0. Okay. So what will be the charge on complex ion? What will be the charge on complex ion? -3. 0 कहाँ से होगा? अरे नहीं, +3 होगा ना कॉम्प्लेक्स में. कोबाल्ट का +3 है, राइट? एंड देन यू हैव NH3 के लिए कितना? 6 into 0. This will be equal to +3. Got it, guys? Here you have +3. And SO4 में कितना होता है? 2 negative, yes or no? हाँ या ना, जल्दी बताइए. सही है? Yes. अब देखिए, अब थोड़ा शायद आपको शायद 11th क्लास या तो 9th क्लास याद आना चाहिए. इसमें है 3 वैलेंसी और इसकी कितनी वैलेंसी? 2 वैलेंसी. क्रिस एंड क्रॉस याद है कुछ? CO NH3 whole 6. This will be how much times? 2 times, and SO4 will be like this. याद है आप लोगों को? इस तरह से करते थे Mg and Cl. Mg के पास valency is what? Valency of Mg is 2. Valency of chlorine is 1. So the formula is going to be MgCl2. याद है नहीं याद है आप लोगों को? Tell me, guys. Yes, You sir. remember these? है ना? ठीक है. सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. ओके, हियर आल्सो यू कैन डू द सेम थिंग. पोटेशियम के लिए देखिए, यू हैव पोटेशियम, उसके लिए 1 होता है, एंड यू हैव निकल CN4 -2, तो इसके लिए 2 है. क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे भी. तो एक तरीका नहीं है, हमने सारे तरीके आपको बता दिए यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल से. एंड यू कैन सी दैट डिफरेंट एग्जाम, आई मीन डिफरेंट वेज आर गुड फॉर डिफरेंट एग्जाम्पल्स. ठीक, तो जो पसंद आया आपको उसको आप इख्तियार कर लीजिए. लिख लिया आप लोगों ने? यस और नो, प्लीज टेल मी. अरे हाँ यार, जल्दी बताइए. Yes, sir. चलिए, राइट. नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नो सर. क्या नो सर? नहीं लिखा है? जल्दी लिखिए तब.
Done, guys? Yes. अब लिखें isomerism in coordination compound. Please write with me. In coordination compounds, we have two different types of isomers. One is known as structural isomer, and the other one is known as stereoisomer. Please write structural isomers, and we have stereoisomers. In structural isomers, we have four categories. These four categories are, first of all, ionization isomer. Second is hydrate isomer. Third is coordination isomer. And fourth is linkage isomer. Stereoisomer may we have two types: geometric isomer and optical isomer. Optical isomer वही chirality वाला. Optical isomer. Okay. We will study structural isomer. Then we are going to study the bonding theories of coordination compound. उसके बाद हम लोग stereo में आएंगे. Because we will go to stereo only when you understand the different types of geometries. Okay. Then only we will go to stereoisomers. Structural isomers are quite easy. इसमें समझने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी. लेकिन stereoisomer के लिए bonding theory you have to know what are the different types of geometries possible. Okay. और थोड़ा सा, if you draw a few compounds in those geometries, then you will be able to understand stereoisomers much effectively. Right. First of all, structural isomer. Structural isomer, please write. Isomers which have same molecular formula. The isomers, rather I should write the molecules or compound having same molecular formula but different structural arrangement, around the central metal atom or ion is called structural isomer. In this, write the first one, ionization isomer. ठीक है, पहले समझ लेते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमर, देन वी आर गोइंग टू राइट अबाउट इट. इतना लिखिए सबसे पहले, स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी. Please see here.
Let's suppose you have two different compounds like this. CONH3, CO, NH3 whole 5, and then you have Cl and SO4 in the as the counter ion. And you have another molecule which has same formula. That means the number of the atom type and the number of those type of atoms are same. You have one cobalt, you still have 4 NH3, sorry, 5 NH3, you have one SO4 and one chlorine. The only difference is that the structure. SO4 is inside the coordination sphere in the second case. In the former case, SO4 is outside. Now, what does that mean? It means that when I'm going to ionize it inside water, I will get SO4 2 negative as an ion, as a counter ion, and here I am going to get Cl negative as counter ion. A plus I will get obviously here cobalt, NH3 whole 5, Cl, and there will be -2 charge. Here I will be getting cobalt, NH3 whole 5, SO4 and -1 charge. Okay. But as you can see that we are getting different types of ions. Okay, in both the cases, that is N, and the number of atoms and the types of atoms are same here. The formula is same. This is the structural formula. ठीक है ना, ये आपको molecular formula नहीं होता है. यहाँ पे आपको structure के बारे में पता चल रहा है ना. That means you know what are the ligands and what is the counter ion. If I am going to write it like this, CO dot 5 NH3 dot Cl and dot SO4, तब तो कुछ नहीं पता चल रहा ना ये पहला वाला कंपाउंड है या फिर दूसरा वाला कंपाउंड है, राइट? Both are having the same molecular formula. How are you going to differentiate these things? See, the first case, if I react this with AgNO3, since there is no chloride as a counter ion, I'm not going to get any reaction. But if I react this one with AgNO3, then I'm going to get what? 1 mole of AgCl because one chloride ion is outside the coordination sphere. Okay? Now, also one more thing. If I'm going to react this with, BaCl2, then we have SO4 2 negative, which is going to give me BaSO4. So how I will distinguish these things? I will react with AgNO3 and BaCl2. Similarly, this one, if I react this with BaCl2, it is not going to give me any product here. Is that clear, guys? Yes or no? Please tell me. Water ionization isomer. हाँ guys, जल्दी बताइए. अच्छा चलो, इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताइएगा. The compound which have same molecular formula. The compound which have same molecular formula but they give different ions in solution. It's called ionization isomer. Then you're going to write about hydrate or solvate isomer. Again, school. More? No, sir.
आगे बढ़े. Please write. Solvate isomers differ by whether or not a solvent molecule ब्रैकेट में लिख लीजिए H2O is directly bonded to a metal ion or is merely present as solvent molecule in crystal. As solvent molecule in the crystal. एक और पॉइंट लिखिए. Solvate isomers gives different number of H2O molecule in solution. ठीक है. For example, यहाँ पे देखिए. All of these are having same formula. 1 Cr, 6 H2O and 3 chlorides. 3 chlorine atoms, 3 Cl. देखिए. 1 Cr, 6 H2O and 3 Cl. All of them. But what is the difference? See, the color is even different. Violet, blue, green, dark green. If you add H plus in the first case, this is going to give you 0 H2O. In the second case, 1 H2 is outside, so it is going to give you 1 H2O. Third case, it is going to give you 2 water molecules. This is how you identify solvate isomers. Okay, they are going to give you different number of water molecules on hydrolysis or in solution.
Done, guys? जल्दी बताइए. Yes, sir. Okay. Right, next. Coordination isomer. इसमें एग्जांपल देख लीजिए पहले. This will be only present if the cationic and anionic both complexes are cationic and anionic. There is no counter ion. ठीक है. For example, you have cobalt NH3 whole 6, and here you have Cr CN whole 6, and its isomer. You have here CrNH36, and here you have cobalt CN whole 6. Okay. So in this case, you can see that the formula is going to be same. That means, wait a second. Formula is going to be same because we have 1 cobalt, 1 chromium, 6 NH3 and 6 CN in both the cases. लेकिन जो bonding है central metal atom के साथ, that is different here. So please write with me. This type of isomerism occurs in compounds containing both anionic and cationic coordination entities, and the isomers differ in the distribution of ligands. पहले में जो ligand NH3 था, that is with cobalt. In the next case, it is with chromium. That is the only difference. Right. The fourth one, linkage isomer. Please write the compounds which have same molecular formula. The compounds having same molecular formula but differ in mode of attachment, differ in mode of attachment of a ligand to the central metal atom or ion are called linkage isomer. Right, next point. This type of isomer arises when a complex contains
ambidentate ligands. ठीक है, for example, you have nitrogen and 2 oxygen. They make 2 different ligands. They make NO2, which binds with nitrogen, and they make another one which is ONO. This binds with oxygen. Similarly, you have CN. This binds with carbon, and NC. This binds with nitrogen. You have SCN binding with sulfur, and you have NCS, which binds with nitrogen. Okay, so when these ligands are present, then we are going to get linkage isomer. Write this down. And then write this question. 4 सवाल, 4 प्लीज आंसर भेज दीजिए 1 2 3 4 करके, सवाल लिखने की जरूरत नहीं. Send the answer. You have 4 minutes. Guys, don't write the question. ठीक है, कॉपी में झटझट आंसर लिखिए और फिर हमको भेज दीजिए. टाइप करने में टाइम जाएगा आई थिंक होगा. फहद, या फर्स्ट वन इज करेक्ट, वेरी गुड. Samaira, first one is correct, second one is also correct, very good Samaira. Third one, yeah, very good Samaira, third one is also correct. Zad, फोर्थ वाला तुक्का मारा आपने, है ना. स्ट्रक्चरल क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल नहीं लिखना है आपको, 4 में से. या समायरा, फोर्थ वाला तुक्का मारा आपने, है ना. हाँ समायरा. No, sir. कहाँ तो फिर, अरे भाई उसमें पानी कहाँ है, पानी है उसमें, फोर्थ में पानी है, बताइए आप. हाँ, फोर्थ में पानी है. पानी नहीं है तो हाइड्रेट आइसोमर कहाँ से हो जाएगा. हाइड्रेट आइसोमर कैसे पहचानते हैं आप, उसमें एसिड डालिए आपको पानी मिलेगा, पानी तो मिल रहा ही नहीं दोनों में से कहीं से. ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इस क्या होगा.
हाँ जैन अब सही है आपका। फहद फहद बड़ा लेट कर रहे हैं आप तो। सेकंड गलत है फहद आपका। सेकंड इज रॉन्ग। यस सहल इट इज करेक्ट, वेरी गुड। टाइम खत्म हो गया भाई लोग। देखिए फर्स्ट वन, cobalt has NH3, chromium has Cn. Here chromium has NH3 and cobalt has Cn. So this will be obviously what type of isomer? Coordination. Here we have ONO and here we have NO2. So obviously it is linkage. Here we have Br and here we have SO4. That means these are ionization isomer. Coordination sphere के बाहर changes हैं. यहाँ पे you can see platinum is bonded only to NH3. Here platinum is bonded to NH3 as well as what? As well as Cl. ठीक है? It is bonded to Cl as well as NH3. And here it is bonded to what? Pt is only bonded to Cl. Here it is also bonded to Cl. तो यहाँ पे you can write two different things rather. ठीक है? इन दोनों को जब आप पानी में डालिएगा ना, then you are going to get different types of ions. So ये जो आपके पास example, this will also be in the case of ionization isomer. And more specifically, it will be in coordination isomer. वैसे तो जितने भी coordination isomer होंगे, all of them will also be ionization isomer. ठीक है? तो more specific क्या हो जाएगा आपके पास? Coordination isomer. ठीक है? Write this down. Jiva, first three are correct. Ahmed, second नहीं कर पाए आप. Second is linkage isomer. Ahmed, you got it, na? It will be linkage isomer, yes or no? Yes, Ahmed. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 Done, guys. Yes or no, please tell me. Is everyone done? Yes, sir. Shall we write next? Bonding in coordination compound. Bonding in coordination compounds. So see, there are four bonding theories for coordination compound. First one is valence bond theory. We'll start with valence bond theory. Then we will learn about crystal field theory. Crystal field theory. Third is your ligand field theory. Fourth is molecular orbital theory. This is VBT, CFT, LFT and MOT. ठीक है? इसमें से आपके सिलेबस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों नहीं है. However, we use some conclusions from both of these things, ligand field theory और molecular orbital theory से कुछ conclusions आपके NCERT में इस्तेमाल किए गए हैं. Okay, right, first of all, right, first of all, valence bond theory.
Now valence bond theory, it's very similar to what you have learned in your 11th standard. ठीक है, what you have learned in your 11th standard. 11th standard valence bond theory में हम लोग कैसे करते हैं? We used to make orbital diagram like this, है ना? फिर उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें. So these type of things are there. The important thing about valence bond theory is a particular table that you have to remember. Small table though. You have to remember the coordination number. It corresponds to certain hybridization, and each hybridization corresponds to certain geometry. Now, if the coordination number is 4, then the hybridization can be either sp3 and it can also be dsp2. Okay. Now, if it is sp3, it will be tetrahedral. If it is dsp2, it will be square planar. Then when you have 5, it is going to be sp3d, which is going to be trigonal bipyramidal. Then you have 6, it can be either sp3 d2 or it will be d2 sp3. Both of these are going to give you octahedral geometry. Both of these are going to give you octahedral geometry. Then guys, this one please tell me. यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Please write. Write another note. It is possible to predict hybridization and geometry of complex using VBT only if we know the magnetic property of the complex. Okay. So what is one more thing? We should know what is the formula of the complex. That means we should know the coordination number. वो हमको मिलना चाहिए. जब तक कोई formula नहीं देगा कैसे बताएंगे किस चीज का निकालना. And other than that, we need also want the magnetic property, whether it is diamagnetic or paramagnetic. Whether it is diamagnetic or paramagnetic. Right? Example here. First case. I have cobalt NH3O6. And this has a charge of 3+. ठीक है, फॉर्मूला देंगे आपको. उसके बाद you will need the magnetic property. It says it is diamagnetic. Second, we have cobalt F6 3 negative. It is paramagnetic. ठीक है, आप किसी चीज से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को जोड़िएगा मत अभी. ठीक है, right now in VBT, right now in
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट वी नीड बोथ ऑफ दीज थिंग्स, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये है या नहीं? प्लीज डोंट रिलेट दैट पैरामैग्नेटिक विल ऑलवेज बी नेगेटिव या एनायनिक लिगेंड होगा यहाँ पे, डायमैग्नेटिक विल ऑलवेज हैव cationic. Please don't make these generalization, these things are not true. Okay, please also don't make any generalization about the ligand and diamagnetic and paramagnetic behavior. Right now you are not going to make any generalization. Okay, if I am going to ask you that please explain the structure of this compound or this complex using valence bond theory, then your responsibility is to ask me, sir, whether it is diamagnetic or paramagnetic. Without that information, we cannot tell whether the complex is dsp2 or sp3d2. Okay, so these things we cannot get. We cannot tell the hybridization if we don't know whether it is diamagnetic or paramagnetic. Okay, in the NCERT there will be some questions in which they will be asking you explain these structures using valence bond theory, and they have not given you any magnetic property. So please yaad rakhiye, those questions are after the complete chapter. Now, once you complete this particular chapter, then you will understand, looking at the complex, whether it will be paramagnetic or diamagnetic. Okay, but right now you don't know. Right now, even with valence bond theory, we don't know. Now let's see the first one. काम करते हैं. Okay, please keep it till here. Okay, because if I start now, and I will take a class on Friday also. I think I announced this on Monday only. Now you guys tell me. Here. Friday. What time should I Sir, take? 4 o'clock possible नहीं है, मैथ का ट्यूशन है वो टाइम. कितने बजे से कितने बजे तक मैथ्स का ट्यूशन है? 2 से 5 या 6 o'clock तक रहता मेरा. So 5:30 से start. 5:30. Raise your hand if it is possible. जिन लोगों के लिए possible है 4 to 5:30 तक. Raise your hand. If it is possible 4 to 5:30. This is case A. Okay, so we have Adriel, HR. Who is HR? Mamuna and Zain. Okay, Adriel. Okay, Rishan also. Rishan, he does not even raise hand or something else. Okay. So others who have not raised their hand right now, you all will tell me. Okay, Mamuna, you can attend this now 4 to 5:30. Okay. So we have how many? We have these people who can attend. Let me take a note of this. These guys will attend at 4 to 5:30. जो आप लोग का अभी का टाइम रहता है, राइट? है ना? कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे? We have Jiva, Samaira, Abdurrahman, Fahad, Ahmed, and Mamuna. ठीक है. Now for the rest of you guys, can we do from 8:30